क्या आप रियली तैयार हैं निखरने के लिए प्रेम में? क्या आप लव की गहराई को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सामने वाले व्यक्ति को बियॉन्ड बॉडी देखने के लिए तैयार हैं? People adopted बहुत सारे रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप क्वायरीज सॉर्ट हो जाएगी कि रिलेशनशिप जैसे खत्म हो जाता है, we always are left with the next. What is exactly manifestation? Whatever you assume becomes your reality. Shifting of this mindset needs practice too. The only one that's limiting you is your. वेलकम टू द ओकल्ट शो। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हर एक युवा और युवती के दिल में धड़कते होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड कैसे रिलेशनशिप में खोए हुए लोगों को उनकी सही राह दिखाने के लिए हम उनका हेल्प कर सकते हैं। हम बात करेंगे कैसे रिलेशनशिप में खोए हुए एक्स को वापस ले आ सकते हैं एंड ये सब बात करेंगे थ्रू एंड हाउ टैरो कार्ड्स कैन हेल्प यू इन अ रिलेशनशिप और जो भी तुम चाहो वो अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ और वो एक्चुअली में अपने लाइफ में पाओ। तो आई गेस आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स नॉट वेट एंड चलते हैं आगे। सो फॉर दिस पॉडकास्ट आई वेलकम मिस ममता, जो एक टैरो कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस रखती है टैरो कार्ड रीडिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइसेस में। सो वेलकम यू अगेन मिस ममता। हमने लास्ट पॉडकास्ट में कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टैरो कार्ड जो हमें यूनिवर्स से रिलेट करते हैं उसके बारे में बात की। आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आजकल हर एक औरत आदमी के मन में रहता ही होगा, वो है रिलेशनशिप्स। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जिस मुकाम में मैं अभी हूँ, लाइक जिस पोजीशन में मैं हूँ, मुझे रिलेशनशिप का जो मतलब है वो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि आजकल हर 2 दिन में रिश्ते बदलते हैं। सही कहा आपने। इस एक टॉपिक के ऊपर आपकी क्या अभिप्राय है, लाइक क्या ऑप्शंस जो आप रखते हो इसके बारे में? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक और एक डिफिकल्टी इस जमाने में बन चुकी है कि अगर हम प्रॉपरली इसको डील ना करें तो ये हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और कई लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स और थिंकिंग्स भी लेकर आती हैं, क्योंकि हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग्स वांट लव। प्रेम एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन में खूबसूरती भर सकता है, रंगत ला सकता है। तो कैसे इस लव सिचुएशन में हम अपने आइडियाज को चेंज करें, अपने माइंडसेट को इस प्रकार बनाएं कि हम रिलेशनशिप में हमेशा सक्सेस अनुभव करें, प्रेम अनुभव करें और जो हमें चाहिए वो हम अनुभव करें। इसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, अपने भीतर हमें हील करना होगा, अपनी शैडो सेल्फ को हील करना होगा, अपने भीतर इनसिक्योरिटीज को हील करना होगा। सो ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है जिसके ऊपर जाकर स्वयं पर लौटकर यू कैन एक्चुअली हैव एनीथिंग दैट यू वांट इन दिस एक्सिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप। ओह, आई गेस आजकल के बहुत लोगों को ये बहुत भारी सुनाई देगा क्योंकि they are not following it and Yes. I guess they are not seeking love the way they want. They want, correct. तो इसमें हमें ये एक पहलू जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सब कुछ आपसे शुरू होता है और सब कुछ आप पर ही ख़त्म होता है। अगर इस स्पिरिचुअल ट्रूथ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम इस पहलू को अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। जो आप सामने वाले व्यक्ति में चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके भीतर छुपा हुआ है, वो संभावना आपके भीतर है। सो अगर हम अपने ही भीतर, अपनी इनर बीइंग से अगर लव की फ्रीक्वेंसी से, लव की वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं करेंगे, सो बाहर आप सोचिए कैसे हम वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम उस चीज़ को चाहेंगे, क्योंकि हम भी ऐसे व्यक्ति के साथ समय गुजारना चाहते हैं जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। आपको कैसा लगेगा अगर कोई व्यक्ति आपसे सिर्फ कुछ चाह रहा है, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है? सेल्फिश है बंदा। यस, हम सबकॉन्शियसली उससे दूर भागना चाहते हैं। और अगर हमें कोई इतने बड़े शब्द कह दे कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग, तो हम वी कैन नॉट we just don't understand. Definitely. हम बस back off नहीं, हम मिक्स नहीं हो पाएगा। Yes, exactly. So इसीलिए we need to actually understand and हमें अपने माइंड को, अपनी पर्सनालिटी को इस प्रकार बनाना है, इस प्रकार अपने में हीलिंग लानी है कि what we want actually gets manifested. And this is very, very easy. It just takes some work to break the conditioning. Okay? Some work to break the thoughts, the conditioning, the collective conditioning, and we can easily manifest the love of our life. But I guess आजकल patience is not very easy to get to people, right? Correct. Patience जिसके पास होगा they can invest time, but आजकल सबको they want quick love. Yes. They want to meet a girl in the night या एक लड़के को रात में मिलेंगे and they should have a love story after that. But I don't think so. Finding the perfect guy or soulmate is that easy, right?
Okay. It's a big process, Yes, I believe. it's a big process in terms of shifting the mind. Okay. अभी कितना हम तैयार है इसके लिए? Because see, finding your right partner or your soulmate, it again boils down to your identification. Okay. It again boils down to what you're seeking in life. Okay, in reality, what do you actually want? What do you actually want? क्या आप तैयार हैं? क्या आप really तैयार हैं निखरने के लिए प्रेम में? क्या आप लव की गहराई को जानने के लिए तैयार हैं? Okay. क्या आप उस सामने वाले व्यक्ति को beyond body देखने के लिए तैयार है? Right? So all of these things are very important when it comes to love. And let me tell you, when you actually have the vibration or the frequency of love, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा. सब कुछ अच्छा लगेगा. खिला butterflies coming out and yes. I feel it. So that love is very unique and we all are seeking that love. But हम समझ नहीं पाते. हमें लगता है ये लड़की नहीं, वो लड़का चाहिए, वो लड़का नहीं, वो लड़की चाहिए. डाइसी हो जाते लोग. Yes, कि इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें वो अच्छा नहीं है, इसकी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसका वो नेचर अच्छा नहीं लग रहा है. You cannot just completely go in that dimension because वो आपको anxiety और depression में ही लेके जाएगा. Maybe I guess ये भी एक आजकल का एक वो this is trend going on कि if you don't like a guy or girl जो आपके status के हिसाब से नहीं आ रहा, this changes but they never know, they never try to connect with that guy. Connect, exactly. ये आपने बहुत अच्छी बात कही, एडसन की it's very important to connect. With the person. हम connect करना ही भूल गए हैं. This is our main suffering. और as a spiritual beings जब तक हम connection नहीं ढूंढते हैं हम भटकते रहेंगे. Right? हमें लगता है हमें वो करियर मिलेगा तो खुशी मिलेगी, वो पार्टनर मिलेगा तो खुशी मिलेगी. ना हम एक्चुअली खुशी को जानते हैं और ना गहराई से दुख को भी जानते हैं. हम गहराई से किसी चीज को जानते ही नहीं है. ये हमारी पीड़ा का कारण है, यही हमारी एक्चुअल सफरिंग है. सो कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट. और उस प्लेस में जस्ट नोइंग दैट लव इज हु यू आर, इट इज नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ यू. ये मैं हमेशा इवन मैं जितने भी क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ और इवन टैरो से भी हमेशा जब भी मैं स्पिरिट से कनेक्ट करती हूँ आई ऑलवेज गेट दिस चैनलिंग फ्रॉम एंजल्स दैट वी आर विद इन यू, वी आर नॉट आउटसाइड ऑफ यू. सो जो आप ढूंढ रहे हैं, जो प्यार आप चाह रहे हैं, दैट इज विद इन यू. जैसे आप उस एनर्जी में टैप इन करते हैं आप अपने आप देखेंगे कि मिरेकल्स आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएंगे. बहुत सेल्फ प्रोवोकिंग है. I guess a lot of people need to work on their and practice themselves to know who they are. And I guess the law of attraction is very similar in everywhere. Correct. It's very natural. Like if I'm getting attracted to a girl, even if I'm in a relationship or even if I'm out of relationship, it's very natural. But is that a calling? कि वो हमें बता रहा है कि भाई you still need a soulmate. Like the person you are with, it's not actually the person you're not meant to be with. Is it actually something there, surface level में कि हमें जो जाके जानना पड़ेगा? Yes. देखिए जब हम जितना अलाइन होंगे ना अपने आप से उतना हम व्यर्थ की चीजों से अपने आप डिस्कनेक्ट होते जाएंगे. फिल्टरिंग होता जाएगा. और जितना हम हम कनेक्ट नहीं करेंगे उतना हम बाहर भटकेंगे. ये वो ऐसा वैसा. सो यू हैव टू हैव दैट नोइंग, यू हैव टू हैव दैट कॉलिंग, यू हैव टू नो डीप डाउन, यू हैव टू हैव अ कनेक्शन. एंड दिस इज द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू बिकॉज सी सिंस वी आर स्पीकिंग ऑन दिस इट माइट सीम कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है या यू हैव टू चेंज समथिंग ड्रास्टिकली. बट एक्चुअली यू आर कमिंग बैक टू योर होम. इट इज नॉट डिफिकल्ट. You were someone else, but now you're coming back to who you are, which will feel so good, which will feel like yes, finally you're back home, you're back in yourself, you're back in your love, comfort space, you're back there. So yes, I guess बहुत लोगों को ये जानना पड़ेगा कि they are deviating from whom they were now because उनने वो adopt कर लिया है कि मेरी वो identity है, they are not tracing it back. Correct. तो इस सब चीजों के चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत लोग are deviating from who they want to be with or what their career options are. Like we can say that ये चीज हर चीज में लागू हो सकती है. मेरे जो career choices है मैं जिससे शायद अपनी लाइफ आगे बिताऊंगा या मेरे डेली चॉइसेस जो मैं लेता हूँ वो भी इसलिए भटक रहे क्योंकि मैं शायद दूसरे किसी या किसी और सिचुएशन से इफेक्टेड और मैनिपुलेटेड हो रखा हूँ. We are like deviating from our true self. Very correct. I totally agree on it. And that's where this law of attraction, manifestation comes in. That's where हम conscious होते हैं. We are conscious
this, and that's where that it hits you somewhere within ki wait, this is not what I came here for. Exactly, yeah, it does. Yes. Very placidly it does. Yes. But as you said, manifestation, it's like something which is going on everywhere. TikTok, Instagram, YouTube, you're scrolling, तुम्हें दिखेगा एक ना एक reel जिसमें people are talking about manifesting your inner desire. Yes. There's this a murti of a goddess saying that this reel came to you. So what is exactly manifestation? क्योंकि मुझे लगता है अगर आँख बंद करके मांगना कि मुझे एक नई बहुत चाहिए, that's not manifestation, right? That's not manifestation. How people are making it. Correct. So manifestation basically is what we are 24/7 doing. Okay. Manifestation is not something going outside of yourself and doing. Because हम इतना खोए हुए हैं, तो वो टर्म आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. बट मैनिफेस्टेशन का सिंपल अर्थ यही है कि जो आपके भीतर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो आपके भीतर जो भी चीजें हैं, वो आप फिजिकल रियलिटी में अनुभव कर रहे हैं, जो एक मैटर फॉर्म में आप अनुभव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लव विद इन, मैनिफेस्टेशन इज लाइक फॉर यू हैव अ डिजायर फॉर अ पर्सन. मैनिफेस्टेशन इज लाइक you are aligning yourself to that frequency, that vibration where you are already one with that person. Okay. Right? और वो चीज आप अपनी physical reality में अनुभव कर रहे हैं. So you're making it happen. Yeah. So we are aligning to a different reality where it is already a reality. एक ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंटरनली, बिकॉज एवरीथिंग इज विद इन यू. सो हम अपने भीतर उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं जहाँ पर हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम रहना चाहते हैं. एंड इंटरनली वी आर विजुअलाइजिंग, बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इमेजिनेशन, राइट? सो आप सोचिए कि हम कितना सीमित रहते हैं. 90% हमारा जो माइंड, हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है, वो सबकॉन्शियस है, राइट? सो सबकॉन्शियसली वी कैन नॉट मेक द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इमेजिनेशन. तो अगर हम उस चीज को विजुअलाइज करें, द लव दैट वी वांट, द लाइफ दैट वी वांट, द करियर दैट वी वांट, द अबंडेंस दैट वी वांट, तो हमारी सेल्स उस न्यू इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करेंगे. ओके, एंड एज अ रिजल्ट, इफ वी हैव फेथ एंड ट्रस्ट एंड बिलीव इन द न्यू अजम्पशन, इन द न्यू रियलिटी कि ये अब मेरी रियलिटी है, आई एम वन विद दैट पर्सन, या आई एम वन विद दैट जॉब, आई एम वन विद दैट करियर. सो क्या हो जाएगा इज आपका सबकॉन्शियस माइंड विल मेक दैट कम ट्रू. इट विल मैनिफेस्ट, इट हैज टू पुश आउट. बट आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आप वेवर करेंगे बीच में कि ये मेरी रियलिटी है, अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लव. ओके, यू हैव अ पर्सन जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है एंड यू वांट दैट पर्सन बैक. या फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू एसोसिएट योरसेल्फ विद द पास्ट स्टोरी कि उस पर्सन ने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसने तो मुझे चीट किया था, उसने तो मुझे धोखा दिया था, उसने तो ऐसा किया था. इफ यू आर एसोसिएटिंग स्टिल विद दैट पास्ट स्टोरी, you are not going to manifest new thing. You are still going to attract the same story. So एक बहुत बड़ी जर्नी है to not identify with your past. It's like something which will keep on happening because you're tracing back to your past memories. To your past memories, and आपके mind को conditioning हो गई है, mind को आदत हो गई है. You're expecting that only. You're expecting that only. So universe का law है, whatever you assume becomes your reality. So universally also we can state that, right? Yes, universally we can, scientifically, exactly. Everything is like who you are basically. वही आप बाहर देखेंगे. And scientifically also it's 99.99% is energy and only 0.001% is matter. और आज की दुनिया में हम मैटर से मैटर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो असंभव है. अगर आप कोई चेंज बनाना चाहते हैं, change the 99% which is within you. It's not outside of you. Energy is within you. Change that energy, shift through that. And आप अनुभव करेंगे जैसे आपने ओल्ड स्टोरी को रिलीज किया, आपने नए assumption बनाए, your reality will reflect your assumption. So at any given moment you can choose, now I make the assumption to look at the situation in a different way. Okay. Now I make the assumption to change and see my circumstances in a different way, right? And as a result, because the law is such, you will attract your assumption and it will be true in your frame of reality. So basically, whatever I will think,
and I have to do it constantly. Consciously and constantly. Both of them are like needed. Until and unless it becomes your natural state. Okay? So अगर मैं रोज सोच रहा हूँ कि भाई मुझे तो चाहिए बहुत सारा अच्छा काम, but deep inside me I'm thinking that no, I don't deserve. Okay, so that will conflict and Yes. दोनों cut off होके I won't get it. Yes. So you have to have a straight mind. Consciously also have to make yourself think कि whatever तुम चाहते हो, you are gonna get it. Yes, you're Okay. going to get it, and you have to either explain your conscious mind with the science, or you have to put it completely aside. Basically conditioning very well. Very, yeah. From the start? From the start to the Okay. end. This is my reality, and if I decide that this is this, I'm not going to go back to deciding that this is not. Okay. Okay, if I decide कि ऐसा है, तो I'm not going to waver. I'm not going to go back and think that this is not. So basically shifting the mindset Yes. from what you were to a new self of yours, which you were not identifying पहले. your identity, और जैसे identity shift होती है वैसे naturally things shift. Yeah, exactly. Naturally, you don't have to do anything. Yeah, you adopt some new habits, you're gonna shift to something else which Yes. you were not even new Yes. to. That's good. But ये जो shift of mind है, is it that easy to happen? Because I don't think so. Look, like if I do something and I've been doing it for the past 10-12 साल, मुझे नहीं लगता कि by just thinking in like the first go, मैं एकदम से अपने आप को कंडीशन कर पाऊंगा कि मेरा जो पहला रियलिटी था उसको मैं बदल पाऊँ. Yes, shifting of this mindset needs practice too. Correct, and that's where the magic of subconscious comes in. Oh. Okay, that's where the magic and the principle of hermetic principle and the quantum physics comes in. Okay. यहाँ पर हमें बहुत आपने क्वेश्चन जो पूछा है, right, is very good, and that's where most of people struggle. सबसे पहले you have to create gap. Okay, gap between The most difficult thing. the most difficult, but this is where you start. Okay. Okay, you have to say to yourself, now I am conscious, now I am aware. Now I am conscious and now I am aware. अगर आपके पास पास्ट में चॉइस होती, okay, अगर आपके पास पास्ट में चॉइस होती, तो क्या आप वही चीजें चुनते या वही लाइफ चुनते जो आपने जी है? नहीं, Okay, नहीं, right? नहीं बिल्कुल चुनते. नहीं. तो अभी से we have to know that now we have the choice. Yeah. And this choice is to become conscious, and this choice is to become aware. This choice is to choose differently, Okay. to see differently, right? And you can easily impress your subconscious mind 2 times in a day. One is when you go to sleep. जब आप relax हो रहे हो तो your subconscious doors are open. And second is when you wake up, when you are in the dreamy state जहाँ पे you're not even, you know, Aware that it's reality or yeah, not. तो आप you know kind of एक सपने जैसे स्टेट में है, नींद में है, आप टोटल जागे हुए नहीं है और सोए हुए नहीं है. उस वक्त अगर आप कॉन्शियस हुए और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम देना इन द सेंस कि बिलीविंग एंड विजुअलाइजिंग दैट यू आर ऑलरेडी इन दैट रियलिटी. Okay. कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वो जॉब चाहिए, आपको पता भी नहीं है कि वो कैसे आएगी, सर्कमस्टांसेस आपके पूरे उस जॉब के विपरीत है, आप नींद में सोते समय या जागेंगे, यू हैव टू गो इन दैट स्टेट एंड यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू फील दैट यू आर ऑलरेडी इन दैट जॉब. Wow. And trust me, your subconscious mind will make it happen. Wow, that's It will make it happen. Bridge of events ऐसे होंगे, circumstances ऐसे change होंगे, आप ऐसे लोगों से अनायास मिलेंगे. Yeah, that like coincidence, छोटे yes, छोटे incidents synchronicity will होंगे happen. which will make all the stuff that you are thinking, that Correct, you're believing that to be true, will Yes, happen. will happen. That's a really thought-provoking idea right now. Yes, and let me tell you, if you practice this for straight 21 days, you will shift immensely. Wow. Immensely, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस नए पर्सन की तरह सोचने लगेंगे, आप उस नए पर्सन की तरह चॉइसेस बनाने लगेंगे, right? And we have to understand that we are actually nothingness. We are actually शून्यता, जहाँ से ये सब आया है. We have the ability to go in any identity, in any identification that we want. यही तो लीला है, Can यही तो shift खेल from है. one खाचा to a different Do it, खाचा. yes, and this is the game of life. Wow. This is the game of life. Oh my god. Oh my god. It's very baffling क्योंकि Yeah. एकदम से जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, like you have to do like a lot of things, you have to do a lot of sacrifice, but it just takes like few थोड़ा चंद moment where you just have to condition yourself saying that okay, whatever you want, तुम्हें जो चाहिए जिंदगी में, तुम्हें चाहिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फेम,
You just have to manifest it in a way that everything the world brings to you. Correct. The world conspires to get it to you, like from the alchemist Paulo Coelho, right? Yes. That's actually, to be honest, ये ऐसा एक topic है which I never had an interest, but right now talking to you, a lot of new surface level things are coming up which actually relate बहुत ज़्यादा कि कितना fundamentally हमारे जिंदगियों से जुड़ा हुआ है. तो I believe tarot maybe ऐसा कुछ होगा which can symbolize a lot of similarity. Yes. And tarot, that's why I was so attracted to tarot, because tarot में actually you have the entire system of manifestation hidden. So we can easily see this depicted with the card of magician जो tarot में. Yes. Very interesting name though. Very interesting. Magician. So जादू ही तो है ये सब कुछ. You know, it's magic. It's magician. So you know, this is the card of magician. You know, and so you can see. Yes, and there is so much symbolism hidden in this tarot card. Magician में हम देख सकते हैं that there's a guy here, who looks very, very mysterious. So it's very magical. A robe is there. He's holding a candle. I don't know if it's a candle. It's a wand. It's a wand. Wow. Yes, it's a magical wand, and he has this infinity. Yes, and there are all these flowers here. And tarot में जो 4 suits होते हैं, वो यहाँ पर है. जो cup आप देख सकते हैं. You know, we have the pentacle, we have the sword, and we have the wand. Okay, and fifth element spirit का होता है, जो infinity के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है. So magician card इतना रहस्यमय कार्ड है और जिसमें manifestation की सारी process actually बताई गई है, which goes back to hermetic principle. Magician states that as within, so without, as above, so below. So as above, so below का अर्थ है उसका एक हाथ ऊपर है जो दर्शा रहा है as above, so below. Wow. दोनों direction में. Nice. Below means in the physical reality. Above means in the spiritual realms. Reality. And you are like in between. In between, you are manifesting that from the above dimension into. Okay. So इसका अर्थ है as above, so below. Wow. So as in the upper dimensions, as with my spirit, as with my higher self, what is the truth? It shall be below. It shall be in this dimension. That's good. So if someone gets this card, that means something is there. That means they have the power. They have the power of intention, the power of will to manifest anything that they want. The most capable. Yes. So magician एक इतना जादुई कार्ड है कि ये किसी भी रीजन का रुख बदल सकता है. It's that powerful. Okay. Nice. And second is as within, so without. So as within, जैसा मेरे भीतर होगा वैसा मेरे बाहर का जगत होगा. So अगर मेरे भीतर क्रोध है, अगर मेरे भीतर जेलसी है, मैं ऐसा कुछ ढूंढ ही लूंगी बाहर जिसमें वो मुझे जेलसी मुझे मिल जाएगा. Like if I'm very, मैं बहुत ज़्यादा घृणा करता हूँ किसी चीज से, I'll encounter something like that. And if you're in love, even if like situation ऐसी है, फिर भी आप उसमें प्यार ढूंढेंगे, फिर भी आप उसमें love ढूंढेंगे. So this is that hermetic principle which is as within, so without. It's all like we can concentrate सब कुछ, it will come back to ourselves. Yes, and what makes the magician a magician is his focus and will. And जो हमें कहीं ना कहीं quantum physics की तरफ ले जाता है, इस थ्योरी की तरफ ले जाता है कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम प्रभावित कर सकते हैं through an observer effect. Like as in if I'm seeing, I can notice electron, or if I'm not seeing, I can't. Something like that. It's like if एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अगर एक ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से इफ आई एम ऑब्जर्विंग दैट, आई कैन इन्फ्लुएंस दैट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एंड क्वांटम वेव्स कैन कोलैप्स एंड अ न्यू form of reality can be manifested. I can alter it. You can alter it. You can change it by my subconscious or my just my your focus, your observation, without getting involved. इसलिए क्या कहते हैं, अवेयरनेस का और साक्षी का इतना कहा गया है. बुद्ध ने कहा है, ओशो ने कहा है, all the enlightened masters are telling you that you are not your thoughts, you are not your body, you are not your circumstances, you are not your pain, you are the observer observing it all. Okay, so whatever is happening, we are just observing, and that observer can, influence by changing its observation. Nice. That means the way we think
can actually change what we are. Yes, Nice. and your thoughts create your reality. Your why? Because आपके thoughts आपके अंदर एक emotion पैदा करते हैं. हाँ जी. वो emotion आपकी एक state of being पैदा करता है. Obviously. और वो state of being आप वही चीज attract करते हैं. You know. That's like everything related. Everything. अगर relates. तुम core में you are like going अलग उससे, that will end up something else जो तुम actually तुम्हें नहीं चाहिए था जिंदगी में. Yes, yes. Nice. So basically, relationship will improve a lot if we are concentrating on all these factors, like through manifesting and everything. Correct. And this goes back to देखो क्या होता है as a human being, we are naturally attached to emotions, Exactly. right? Yeah. We are emotional. Yeah. When for some people it's easy to manifest a job. For some people it's easy to manifest money. But जहाँ relationship की बात आती है वहाँ attachment आ जाती है. Right. तो देखो हम इसलिए influence नहीं कर पाते क्योंकि हम attach होते हैं. किसी से. किसी चीज से, किसी सिचुएशन से, किसी बैड सर्कमस्टांस से. सो अगर हम उस अटैचमेंट को तोड़े तो हम एक्चुअली वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए. सो बट वोंट ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कमिटमेंट वाले आइडिया से? किस प्रकार? जैसे कि अगर इफ यू वांट टू डिटैच इमोशनली, वोंट इट लाइक destabilize commitment वाला idea? No. Attachment is actually the energy of wanting. Okay, like you are constantly wanting it. सोचिए, if you have anything, would you be attached? Okay. You already have it. Yeah. Yeah, you already have it. Why would you be attached to it? Exactly. Yeah. Okay, that's a very good thought क्योंकि बहुत लोगों को आजकल attachment में बहुत लोग possessive है. Possessive है. And they're taking it in the wrong way. So if you actually want someone to be attached to you, you de-attach. Nice. Yeah. He's already there. बस तुम उसको बहुत ज्यादा conscious करवा रहे हो कि भाई तुम मुझे दो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा है. That is actually messing up with his own head. His head. So it's actually अगर आपको कुछ चाहिए ना, do not take any physical action. Do not sit and explain that person hours and hours, because let me tell you, this wisdom is coming from lot of suffering. I have been suffering into this like since years, and I could never understand why. I would always feel like that person has the fault. He should be like this. He should be like that. And I am correct. I am pure. Then why am I facing this challenge? Exactly. उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए. And the moment I realized, wait, hold on, see what's going wrong with this. You are conscious creator. If that person is behaving in your reality, there is something wrong with your perception about that person. Obviously, yeah. Like if a person in a relationship is constantly thinking कि मेरा बंदा मुझे धोखा देगा, that might eventually will attract it. Even if that person does not wants to give you धोखा, right? Even if that person does not, the universe will conspire जो तुम चाहते हो, even though वो अच्छा हो या बुरा हो. Okay. So it's just about shifting your perception, and I know it's a journey because we come in the energy of fear, right? We come in the energy of fear कि what if it's too good to be true? Exactly. And it happens. It's a fantasy, it's something अमिराज. हमें लगता है कि वो वास्तविक नहीं है, just something एक सपना जैसा है कि हमें असली लगता ही नहीं कभी. Yes. So come back to the knowing of observer. Come back to the knowing that you are light, you are love, and you are beyond your fear. तो जैसे जैसे हम उस एनर्जी में टैप इन करेंगे, क्योंकि फसल तो हमें पास्ट की थोड़ी बहुत काटनी पड़ेगी, देखिए, क्योंकि आपने इतने साल डाले हैं नेगेटिव सोचने में, तो उसकी फसल काटनी पड़ेगी. बट डू नॉट लूज होप. इसको आप बढ़ाइए. इसको आप बढ़ाइए. तो नेचुरली इफ यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू व्हाट यू डोंट वांट, एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, that what you want will grow. Oh my God. So मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया, if people adopt it, बहुत सारे relationships और relationship queries sort हो जाएगी. Yes. क्योंकि if you are well with yourself, तुम बाकी लोगों के लिए जो है वो ठीक कर सकते. Even you can make your own surrounding the better place. Yes. You can influence, and your presence will influence. Wow. It's not something that you have to say or do. Like a magnet. Yeah, your presence will do it. Wow. You are attracting it because you're manifesting it. Yes, correct. Right. So manifestation is the core of how you can develop further in life. Everything depends on it, and you have to change your identity. For example, अगर आप ऐसे person हैं जिसको हमेशा ऐसे लड़के मिले हैं who's playboy, or who do not want to value commitment, who are not good in themselves, who have the personality of always using other people. So
इफ यू आइडेंटिफाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो वो चीज और होगी. आप आइडेंटिफिकेशन ही कट कर दो. स्टार्टिंग में इट्स लाइक यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. यू विल फील दैट कि यू सडनली हैव टू शिफ्ट इनटू द कॉन्शियसनेस मेंटली. आई एम दैट पर्सन हु अट्रैक्ट्स जेन्युइन पीपल टू मी. आई एम दैट पर्सन. आई एम जेन्युइन इनसाइड. और कभी कभी बाहर की दुनिया कुछ ऐसे घाव हमारे भीतर होते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है. सो कभी कभी हमें अपने भीतर देखना होता है कि क्या कोई पास्ट ट्रॉमा से मैं हील नहीं हुई हूँ जिसकी वजह से मेरा सबकॉन्शियस मुझे वो चीज दिखा रहा है बार बार हीलिंग के लिए. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अदर पर्सन. इट्स अबाउट योरसेल्फ. मोस्ट ऑफ द सीक विदिन to find the answers first. Yes. ये सब क्वेश्चन्स के बीच में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग याद आया कि रिलेशनशिप जैसे खत्म हो जाता है we always are left with an ex. Can I get my ex back? Yes. Can I say that? Yes. You can. Yes, Is you it possible? can. Wow. You can get anything that you want. You can have anything that you want by knowing, by shifting, by changing, by aligning to that destiny. Wow. You can get your ex So back. even if it was the worst breakup. Worst breakup. Well, I've myself experienced it. Okay. You can manifest anything. Nice. The only one that's limiting you is your ego. It's myself. Yes, it's the illusion of separation. आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहाँ पर परमात्मा आपको हर चीज देने के लिए उत्सुक है. क्योंकि see, God will only create God, not less than that. Facts. Maybe, yeah, facts. Yeah. How can God create something which is not God? Which does not have that essence of abundance. It actually make a person think इतना कि how can God make something lesser to him? Lesser to him. And this was an insight that I got in my meditation. Okay. That how can God create that is not God? You know, so I was also thinking 2 days, wait, where is this coming from? so that's the truth. And to attract your ex back, first of all, जैसे मैंने आपको बताया, change the old story. Yeah. Change your perception of what you think about the connection. Let the past completely go. आप अपने mind से सामने वाले person के best version को बाहर निकाल रहे हैं. You're not manipulating anyone. You are not, controlling their free will. That person wants to come in their best version. Yeah. You want to come in your best version. Exactly. So you're attracting their best version. Oh. You're actually getting back what you actually need from the person that you left behind. Yes, and you're trusting in the feelings of love, and this will only happen if you want to experience love. अगर आपका intention कुछ गलत है कि मुझे उस person को दिखाना है, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे भी उसे धोखा देना है. If you are from this kind of state, this kind of misery, this kind of resentment, that will not even help you. That will not even help that person. That will not help the universe. So it has to. That will not align to your path. So आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको let go करना पड़ेगा. But if your desire is coming from love and you deeply in your heart trust that that person was meant for you, but due to these things you got separated somehow, you can manifest that back. Nice. You can manifest it 10 times better. So I would like to share an affirmation here. Yeah, sure. That will help a lot of our audience to come in the energy. Either आप अपने ब्रेकअप से ऊपर उठना चाहते हैं, एक न्यू लव को ढूंढना चाहते हैं जो आपसे ज़्यादा अलाइन करता है, या आप अपने पास्ट लवर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. You have to. I'll share a beautiful affirmation with all of you, and the affirmation is that with the power of divine love within me, I am now one with my divine match. Okay. With the power of the divine love within me, I am now one with my divine match. और जो आपका divine match है, if that divine match is your ex, it will automatically come. And if that divine match is a new person, you are going to be happier than ever. Yeah, obviously. Yeah. A new person coming into life, obviously. You're going to be happier than ever. And if आपकी higher self को, आपके spirit guides को ये पता है that that person is the one for you, then eventually चीजें ऐसी बदलेंगी and you will attract that person. Nice. So always remember, make unconditional love your highest priority, because we all are here to experience love. Wow, that's very thought-provoking. I believe
if you condition yourself, if you are self thought provoking, you can help a lot. तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी लाइफ में वो मिलेगा. Yes. Why? Because this God, this existence is constantly in the frequency of abundance. Wow. It's abundance of love, abundance of money, abundance of everything. It's we who are not allowing ourselves to experience that because हम सोचते we are not good enough. And why do you think you're not good enough when in actuality you don't know who you are? Exactly. अगर आपको पता होता मैं कौन हूँ तब तो आप निर्णय बनाओ ना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है. Exactly. You don't know who you are. You don't know. All that we know is our conditioning. So get away from that. Know who you are. Trust within, and then you can decide and you can choose a reality, whatever you want, maybe it X, new love, anything. It is for you. It is meant for you. You can align to that. Wow, that's something that I believe my viewers and everyone who are willing to like this channel and the podcast would have definitely loved about. And I guess with this we'll end the podcast. And मैं बहुत ज़्यादा thankful हूँ Miss Mamta who helped उनके पर्सपेक्टिव, उनका न्यू अप्रोच से ये जानने के लिए कैसे रिलेशनशिप में ऐसे कोर आइडियाज है जो हम बहुत सालों से गलत तरीके से सोच रहे थे. एंड कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से हम कैसे वो चीज़ें जो हमारे रिलेशनशिप में हम चाहते हैं या हम वो मैनिफेस्ट गलत कर रहे थे वो हम कर सकते हैं. सो आई रियली लाइक टू थैंक यू कि आपने हम सबको अफर्म किया एंड गाइड करा. एंड आई विल लाइक कि सब लोग जो मैम ने अफर्मेशन बताया है वो करे एंड दैट विल हेल्प टू इनकलकेट न्यू थिंग्स इन द लाइफ. एंड आई होप किसी और को कुछ भी फर्दर टॉपिक्स हो जो वो पसंद करे और वो चाहे कि हम अपने पॉडकास्ट या ओकल्ट शो में कवर करें, वो कमेंट डाउन कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट. थैंक यू.